तुम में मैं सिंगर हूँ, तुम में ई निवास हैं जो मैं रंगीला डे से जानता हूँ। राम गोपाल वर्मा साहब का असिस्टेंट डायरेक्टर थे और शूल देखने के बाद आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क विद हिम एंड आई लाइक रणबीर पुश सब्जेक्ट ऑल्सो वेरी मच। ई निवास और मैंने लव के लिए कुछ भी करेगा के वक्त डिसाइड किया था कि अगर हम दोनों को कुछ इंटरेस्टिंग मिलेगा तो एक दूसरे से ज़रूर बात करेंगे एंड आई थिंक दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट। See, again, it's a very, very important film for me. I have a very strong role. It's a very, again, it's more glamorous. So it's a total different image from what the audience has seen of the so-called Preeti. It's the same theme, but in a different kind of a genre. It's a thriller called Tum. And it's a romantic thriller. There's obviously romance in it, but it's got a certain element of newness in it, which you'll find out once you find out what this film is all about. But yes, it is too premature to talk about. All I can say is that it's hopefully going to be a good film. People will like it, and it's got myself, Saif, and Dada coming for the first time together, along with Preeti, and also Srinu, who's a very close buddy of ours. Yeah, it's great to work with them again. We already decided when we get the right script again, we'll repeat the same cast again. So which it happened with them. I'm really waiting forward to work with them again. Saif Ali Khan, I love him. I always respected his father hell of a lot, and he as an actor, I really care a lot. I think he's one of the most talented and very fluid actor who has a lot of energy, a lot of power in him. And Aftab has proved himself time and again in a romantic soft role, in a hard role, and I think it's a very formidable young team that I'll be working with. Jackie, I've known, I've worked with him, I'm working with him in bars. He's great fun to work with, everybody knows that. He's like, and he's a fab actor also. Aftab also, I've worked a lot of times with in Avaya Pagal Diwana. I've done a lot of modeling with him also before. I have Jani Hoga Kya also with him next. So we have a very comfortable working relationship. Saif, it'll be the first time I'll be working with him. And I'm sure it'll be great fun. I'm looking forward to working with Aftab again, as well as with Jackie and Preeti for the first time. Well, all I can say is that's a different genre with the same kind of a cast, and it's something that none of us have experienced also before together. So we're looking forward to doing this together and trying to create a similar impact, if not more, with a thriller genre than just a comedy genre. This time we wanted to be really exciting. We don't want anything coming out at all. So I can just tell you that it's a fantastic storyline. It's not the same thing. It's some of the same thing, but then it's treated very differently. It's going to be treated very differently. We have E. Nivas at the helm, so he's going to do a great job. Well, I think it's much more serious, and I think it's more up E. Nivas's alley than Love के लिए कुछ भी करेगा. तुम में तुम कोई भी हो सकता है, या तो मैं हो सकता हूँ. It could be Saif, it could be Dada, it could be Preeti. That's for you to find out, for me to know, and for you to find out. Sound. By 71. Action. Hi Jenny. You're looking good. What's new? नहीं सर, आज यूनिवर्सल वालों के साथ आपका लंच है. कल 11 बजे जापान का एक डेलीगेशन आ रहा है और रात को यूरोपियन चेन्नई. तमिलनाडु के मिनिस्टर ऑफ What trip? Got it. Tum has got Jackie Shroff, Saif Ali Khan, Aftab and Sakshi, and Bipasha is playing a special appearance in this. It's a very matured love story with the element of fear, with the element of thriller format. So this is the first day of the shooting. This is the scene where we establish Saif's business and Saif's relationship between Jackie Shroff and this guy and Saif. In this film Tum, I'm playing a role of a character who is a reformed person, someone who's had a past and quite a dark past, and someone who's trying to do the right thing in life, and the problems he encounters while trying to lead a good existence with his young child. And it's a love story, and it's a thriller. So the film is based on relationships, it's about friendship, it's about triangle love story in a mature format, and it's undercurrent suspense of who's done it. It's a film about second chances. It's a film about, I don't think any character in it is completely flawless or perfect, which is what makes it interesting. Everybody has a past, and when all these characters meet, like I said, it's basically it's a
starts off as a romantic film and becomes a thriller. Love Ke Liye Kuch Bhi Karega was a comedy which Srinivas directed, and this film is a love story and a thriller, and the role is not at all comic, and it's quite a subdued character which will hopefully be very interesting for me to play. तुम हमारी एक बहुत म्यूज़िकल फिल्म है और निवास इसको डायरेक्ट कर रहे हैं। आफ्ताब शिवदासानी, सैफ अली ख़ान और जैकी श्रॉफ, प्रीति जिंगानी ये आर्टिस्ट हैं इसके, और अभी इसकी बस 10-12 दिन में शूटिंग शुरू होगी और स्टार्ट टू फिनिश होगी फिल्म। इसके अंदर हमने काफ़ी जिस तरह का काम हम लोग करना चाहते हैं, जो करते भी तक आए हैं, उस तरह का काम इसके अंदर है। और गाने जब ये म्यूज़िक इसका रिलीज़ होगा या प्रोमो जब शुरू होंगे तो आपको खुद एहसास होगा। जैसा कि अभी ये गाना हमारा है, कुमार शानूदा ने गाया है, प्यार से उनको शानूदा बोलते हैं हम लोग। उनके बारे में ये है कि हम जब एंटर हमने इंडस्ट्री में किया था तो उनका गाना सुनते हुए और ये सोचते हुए कि हम कभी कंपोज करेंगे तो शानूदा हमारा गाना गाएं, ये सोचते हुए हम करते थे। तो और कई गाने हमारे साथ शानूदा ने गाए हैं, और आज का भी ये जो गाना उन्होंने गाया है वो इट वाज लाइक, जैसा उन्होंने कहा भी कि वो ज़माना जो, क्योंकि स्टूडियो भी यही है, जब आशिकी जो रिकॉर्ड हुई थी वो यही स्टूडियो है और उनके जितने भी गाने थे, और यहीं से वो उसकी याद इस गाने में थोड़ी सी एक हल्की सी झलक मुझे भी ऐसा लग रहा था। और जब उन्होंने गाया गाना तो पूरा वो पुरानी यादें सारी वापस आ गई हैं लौट के। तो वी ऑल होप कि ये वही मुकाम ये गाना हासिल करे जो, और ये फिल्म और इसका म्यूज़िक हासिल करे जो आशिकी को मिला था। निखिल विनय जी के साथ हमने पहले भी बहुत ज़बरदस्त काम किया था। एक टी सीरीज़ से भी हम लोगों ने पिक्चर में एक साथ काम किए थे। हमेशा से मुझे मालूम है कि निखिल विनय जो है ये दोनों बहुत ही मेलोडियस जो कंपोज करते हैं, और हमने इसके साथ कई गाने गा चुके हैं। और आज बहुत दिन बाद हम फिर से काम किया और मुझे ऐसा लगा कि इन लोगों का जो मेलोडी है वो बहुत ज़रूरी है आज के दौर पे, क्योंकि जो गाने रिलीज़ हो रहा है, मैक्सिमम गाने जो हो रहा है, मैक्सिमम गाने लोग भूल भी बहुत जल्दी रहे हैं। बहुत ज़्यादा गाना भी हो रहा है और जल्दी भूल भी रहे हैं लोग। तो आई थिंक कि इस तरह की जो मेलोडी है ये इसकी ज़रूरत है अभी, और मैं चाहूँगा कि निखिल विनय जी इस तरह के गाने और बनाए, मुझे क्यों सारे सिंगर से गवाए, और इस तरह का मेलोडीज़ जो है हमें अभी बहुत ही ज़रूरत है इसकी।